हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट पढ़ना होता है। चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, 6 कार्बन का ग्लूकोज है, जिसमें कि सभी OH राइट साइड है। ठीक है, लेकिन 2 OH जो है लेफ्ट साइड है। तो COH H, CHOH, COH H, CHOH, CH, CH2OH, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। द ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज, वो क्या कहता है कि आई बर्न माई सेल्फ टू प्रोवाइड फ्यूल टू लाइफ, मैं खुद को जलाता हूँ टू प्रोवाइड फ्यूल टू लाइफ, जिंदगी को ईंधन देने के लिए। ठीक है, generated through gluconeogenesis by my friends engaged in the synthesis of lipids, amino acids, deranged in my duties due to diabetes mellitus। तो ये है ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। Carbohydrates are the major source of energy for the living cells. As such, carbohydrates are the first cellular constituents synthesized by green plants during photosynthesis from carbon dioxide and water on absorption of light. Thus, light is the ultimate source of energy for all biological processes। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग सेल्स के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है फर्स्ट सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है, जो कि ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। किससे बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और लाइट के एब्जॉर्प्शन से। तो क्या कह रहा है कि लाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। आगे बढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड्स, द मोनोसेक्राइड ग्लूकोज इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल in carbohydrate metabolism. Since all the major pathways of carbohydrate metabolism are connected with it, glucose is utilized as a source of energy. It is synthesized from non-carbohydrate precursors and stored as glycogen to release glucose as and when the need arises. The other monosaccharides important in carbohydrate metabolism are fructose, galactose, and mannose. The fasting blood sugar level in normal individual is 70 to 100 milligram per deciliter, 4.5 to 5.5 millimole per liter, and it is very efficiently maintained at this level. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन नॉर्मल इंडिविजुअल कितना रहता है? 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर दूसरे तरीका से मापे तो कितना? 4.5 से 5.5 मिलीमोल पर लीटर। एंड इट इज वेरी इफिशिएंटली मेंटेन एट दिस लेवल। फॉर डिटेल रिफर चैप्टर 36। लीवर प्लेज अ की रोल इन मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। लीवर क्या करता है? की रोल प्ले करता है मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। दस लीवर में बी अप्रोप्रिएटली कंसिडर्ड एज ग्लूकोस्टेट मॉनिटर। ग्लूकोस्टेट मॉनिटर भी बोल सकते हैं। अब आते हैं मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। द इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर लिस्टेड। ग्लाइकोलाइसिस, इम्डेन मेयरहॉफ पाथवे, एएमपी, एएमपी भी बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, इम्डेन मेयरहॉफ पाथवे, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट एंड लैक्टेट। दूसरा है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब साइकिल भी बोल सकते हैं, टीसी साइकिल भी बोलते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इम्डेन मेयरहॉफ पाथवे, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट एंड लैक्टेट। दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्रेब साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अमीनो एसिड थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, the synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor, example amino acids, glycerol, etc. For glycogenesis, the formation of glycogen from glucose, the formation of glycogen from glucose. Glycogenolysis, the breakdown of glycogen to glucose. Okay, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, एग्जांपल अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब से। तो ये हो गया। फिर है 6 पॉइंट हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सन, द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सन, पेंटोज फॉस्फेट pathway or direct oxidative pathway. This pathway is an alternative to glycolysis and क्या है? TCA cycle for oxidation of glucose directly to carbon dioxide and water. अल्टरनेट है पाथवे, है ना? तो यहाँ पे फिगर 13.1 में ओवरव्यू ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दिखाया गया है। नोट द फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पाथवेज ग्लूकोज पार्टिसिपेट्स एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ऑक्सीडेटिव पाथवेज और इधर है सिंथेटिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस
हेक्सोस मोनोफॉस्फेट यूरोनिक एसिड पाथवे। सिंथेटिक पाथवे में क्या है? अदर कार्बोहाइड्रेट, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ फैट, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ये सब अपनाएगा। 7 पॉइंट है यूरोनिक एसिड पाथवे। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोरोनिक एसिड, पेंटोसेज एंड in some animals to ascorbic acid, not in man. This pathway is also an alternative oxidative pathway for glucose. 8 point है galactose metabolism. The pathway concerned the pathway is concerned with the conversion of galactose to glucose and the synthesis of lactose. Okay, 9 point है fructose metabolism. The oxidation of fructose to pyruvate and the relation between fructose and glucose metabolism. Next point है 10 K amino sugars and mucopolysaccharides metabolism. The synthesis of amino sugars and other sugars for formation of mucopolysaccharides and glycoproteins. फिर आता है entry of glucose into cell. Glucose concentration is very low in the cells compared to plasma. For humans, less than 100 mg per deciliter. However, glucose does not enter the cells by simple diffusion. Two specific transport systems are recognized for the entry of glucose into the cells. पहला है insulin dependent transport system of glucose. Insulin independent transport system of glucose. This is a carrier mediated uptake of glucose which is not dependent on the hormone insulin. This is operative in hepatocytes, erythrocytes and brain. This is operative in hepatocytes, erythrocytes and brain. Okay. दूसरा है insulin dependent transport system. This occurs in muscles and adipose tissue. Glucose transporter. In recent year, at least 6 glucose transporter GLUT1 to GLUT5 and GLUT7 in the cell membrane have been identified. They exhibit tissue specificity. For instance, GLUT1 is abundant in erythrocytes, whereas GLUT4 is abundant in skeletal muscles and adipose tissue. Insulin increases the number and promotes the activity of GLUT4 in skeletal muscles and adipose tissue. In type 2 diabetes mellitus, insulin resistance is observed in these tissues. This is due to reduction in the quantity of GLUT4 in insulin deficiency. अब आते हैं ग्लाइकोलाइसिस में. Glycolysis is derived from Greek word glycose, sweet or sugar. Lysis means dissolutions. It is a universal pathway in the living cells. The complete pathway of glycolysis was elucidated in 1940. This pathway is often referred to as Eden-Meyerhof pathway, EM pathway, in honor of two biochemists who made a major contribution to the knowledge of glycolysis. Okay, glycolysis is defined as the sequence of reaction converting glucose or glycogen to pyruvate or lactate with the production of ATP. Silent features. Glycolysis takes place in all cells of the body. The enzymes of this pathway are present in the cytosomal fraction of the body. Cytosomal fraction of the cells. Okay. Second point है glycolysis occurs in absence of oxygen anaerobic or in presence of oxygen aerobic. Lactate is the end product under an aerobic condition. In the aerobic condition, pyruvate is formed, which is then oxidized to CO2 and H2O. Third point, glycolysis is a major pathway for ATP synthesis in tissues, lacking mitochondria, example erythrocyte, cornea, lens, etc. Erythrocyte, cornea, and lens. Okay. Fourth point, glycolysis is very essential for brain, which is dependent on glucose for energy. The glucose in the brain has to undergo glycolysis before it oxidizes to CO and H2O. Okay, glycolysis is very essential for brain, which is dependent on glucose for energy. The glucose in brain has to undergo glycolysis before it is oxidized to CO2 and H2O. Fifth point, glycolysis anaerobic may be summarized by the net reaction glucose plus 2 ADP plus 2 inorganic phosphate gives 2 lactate, 2 ATP. Okay, sixth point, glycolysis is a central metabolic pathway with many of its intermediates providing branch point to other pathways. Thus, the intermediates of glycolysis are helpful for synthesis of amino acids and fat. 7 point, reversible of glycolysis along with the alternate arrangements at the irreversible steps will result in the synthesis of glucose, gluconeogenesis. Reversal of glycolysis along with the alternate arrangements at the irreversible step will result in synthesis of glucose, gluconeogenesis. Reactions of glycolysis देखेंगे. The sequence of reaction of glycolysis is given in figure 13.2. The pathway can be divided into three distinct phases. A. Energy investment phase or priming stage. A क्या है? Energy investment phase or priming stage. B. A splitting phase और C है energy generation phase.
तीन स्टेप है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और प्राइमिंग स्टेज, बी स्प्लिटिंग फेज और सी एनर्जी जनरेशन फेज। The sequence of reaction are discussed below. First, energy investment phase. Glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate by hexokinase or glucokinase. Both are isoenzymes. Hexokinase or glucokinase both are isoenzymes. This is an irreversible reaction. This is an irreversible reaction dependent on ATP and magnesium 2 plus magnesium ion. The enzyme hexokinase is present in almost all the tissues. It catalyzes the phosphorylations of various hexoses, fructose, mannose, etc. Has low Km for substrate, about 0.1 millimole, and is inhibited by glucose 6-phosphate. Glucokinase present in liver catalyzes the phosphorylations of only glucose, has high Km for glucose 10 millimole, and is not inhibited by glucose 6-phosphate. Due to high affinity, low Km, glucose is utilized by hexokinase even at low concentration, whereas glucokinase acts only at higher level of glucose, that is after a meal when blood glucose concentration is above 100 mg per deciliter. Glucose 6-phosphate is impermeable to the cell membrane. It is a central molecule with a variety of metabolic fates: glycolysis, glycogenesis, gluconeogenesis, and pentose phosphate pathway. Second point है, glucose 6-phosphate undergo isomerization to give fructose 6-phosphate in the presence of enzyme phosphohexoses, isomerase, and magnesium 2 plus ion. Phosphohexose, isomerase, and magnesium 2 plus ion. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में आइसोमराइज हो जाता है. थर्ड पॉइंट है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इज फॉस्फोरिलेटेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज PFK फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. This is an irreversible and a regulatory step in glycolysis. तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फॉस्फोरिलेट होकर ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज PFK. दिस इज एन इरिवर्सिबल एंड या रेगुलेटरी स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस. बी है स्प्लिटिंग फेज, fourth step. The sixth carbon fructose 1,6 bisphosphate is split, hence the name glycolysis, to 2,3 carbon compound glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate by the enzyme aldolase fructose 1,6 bisphosphate aldolase. ठीक है, दो मोलिक्यूल क्या बन गया, 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate by the enzyme aldolase fructose 1,6 bisphosphate aldolase. फिफ्थ पॉइंट है, the enzyme phosphotriose isomerase catalyzes the reversible interconversion of glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Thus, 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are obtained from 1 molecule of glucose. अब है तीसरा पॉइंट, एनर्जी जनरेशन फेज. सिक्स्थ पॉइंट, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase converts glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate. This step is important as it is involved in the formation of NADH plus H plus and a high energy compound 1,3-bisphosphoglycerate. Iodoacetate and arsenate inhibit the enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. In aerobic condition, NADH passes through the electron transport chain and 6 ATP. 2 into 3 ATPs are synthesized by oxidative phosphorylation. हाई एनर्जी कंपाउंड 1,3-bisphosphoglycerate. एक बार फिर से इस स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे. ठीक है, 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate को 1,3-bisphosphoglycerate में. This step is important as it is involved in the formation of NADH plus H plus and a high energy compound 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate जो है हाई एनर्जी कंपाउंड है. ओके,
और उधर NADH+ भी बन रहा है। आइडोएसीटेट एंड अर्सिनेट इनहिबिट द एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये दो चीज़ जो है आइडोएसीटेट एंड अर्सिनेट, इस एंजाइम को रोक देता है। कौन किस एंजाइम को? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को। से क्या होगा? इन एरोबिक कंडीशन, कोई बात नहीं, क्या होगा वो बस रुक जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा। आगे देखते हैं। इन एरोबिक कंडीशन NADH passes through the electron transport chain and 6 ATP 2 into 3 ATP are synthesized by oxidative phosphorylation। ठीक है। NADH जब पास होता है ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो 6 ATP बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। अब आते हैं इधर आगे, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में ATP ऐड होगा मैग्नीशियम प्लस हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की मदद से, तो तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, फिर क्या हुआ? फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज की मदद से, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज की मदद से ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया। देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या अंतर है? फर्स्ट कार्बन में जो OH है वो ग्लूकोज में लेफ्ट साइड है और फ्रुक्टोज में राइट साइड है, यही अंतर है ना? बाकी सब सेम है। अच्छा, चलो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। इसके बाद क्या हुआ? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की मदद से एक और ATP जो है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ऐड हुआ और फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट बन गया। अच्छा, इसीलिए आइसोमराइज हुआ था ताकि 2 फॉस्फेट ऐड हो सके ना। अच्छा, अब क्या हुआ? नेक्स्ट कॉलम में है फिगर, यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट में अल्डोलेज काम किया। अल्डोलेज जो है इसे तोड़कर 3 कार्बन कंपाउंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है। और इधर क्या है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एसीटोन है और ये एल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? आइसोमेराइज फॉस्फो ट्रायोज आइसोमेरेज की मदद से आपस में चेंज हो सकते हैं। तो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फाइनली बनना है, ये एल्डिहाइड आगे बढ़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक रिलीज होगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। NAD+ जो है NADH+, ये बनाएगा और क्या बनेगा? 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, वन वन में फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप, और तुम्हारा थर्ड में भी, तो 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया और एक ATP का फॉर्मेशन हुआ। ADP जो है मैग्नीशियम के प्रेजेंस में एक फॉस्फेट लेके ATP बनाया। अब रिएक्शन जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में क्या ऐड हुआ? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल दिया। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में इनोलेज ऐड हुआ, इनोलेज, ये क्या किया? मैग्नीशियम के प्रेजेंस में H2O बाहर किया, एक इनोलेज क्या करेगा? डिहाइड्रेशन, एक H2O बाहर कर दिया। फिर क्या बना? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब आगे पायरुवेट काइनेज आया। पायरुवेट काइनेज जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में एक ATP बनाएगा, पायरुवेट काइनेज है ना। पायरुवेट काइनेज से तुम्हारा रिएक्शन आगे बढ़ा और पायरुवेट बनाया। इसको क्या कह सकते हैं? इनोल कह सकते हैं ना, इनोल। डबल बॉन्ड है और अल्कोहल भी है तो इनोल हो गया पायरुवेट। फिर स्पॉन्टेनियस पायरुवेट जो है इनोल से कीटो में बदल जाता है, इनोल से क्या बन गया? कीटो। ये पायरुवेट जो है कीटो में स्पॉन्टेनियसली बदल गया। अब इसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से NADH+ जो है पायरुवेट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ना, रिड्यूस करेगा और एल लैक्टेट बनाएगा, एल लैक्टेट बन गया ये।
So the reaction is reaction in the pathway of glycolysis. The three-step catalyzed by hexokinase, phosphofructokinase, and pyruvate kinase source shown in thick lines are irreversible. तीन स्टेप जो है irreversible है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज। थिक लाइन से दिखाया गया है कहाँ पे, देखो यहाँ पे पाइरुवेट काइनेज और हेक्सोकाइनेज, ठीक है, और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो ये था कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। 7 स्टेप में क्या था, द एंजाइम phosphoglycerate kinase acts on 1,3-bis phosphoglycerate, resulting in the synthesis of ATP and formation of 3-phosphoglycerate. This step is a good example of substrate level phosphorylation. Since ATP is synthesized from the substrate without the involvement of electron transport chain, phosphoglycerate kinase reaction is reversible, a rare example among the kinase reaction. Phosphoglycerate kinase reaction is reversible, a rare example among the kinase reaction. Okay, 8th step है, the 3-phosphoglycerate is converted to 2-phosphoglycerate by phosphoglycerate mutage की मदद से. This is an isomerization reaction. 9th step है, the high energy compound phosphoenol pyruvate is generated from 2-phosphoglycerate by the enzyme enolase. This enzyme requires Mg2 plus और manganese 2 plus, या तो magnesium 2 plus चाहिए या फिर manganese 2 plus, and is inhibited by fluoride for blood glucose stimulation. In laboratory, fluoride is added to the blood to prevent glycolysis. By the cells so that blood glucose is correctly estimated. Fluoride combines with magnesium 2 plus and phosphate to form a complex that binds with active site of enolase and blocks access of substrate. This fluoride is an unusual competitive inhibitor. 10 step, the enzyme pyruvate kinase catalyzes the transfer of high energy phosphate from phosphoenol pyruvate to ADP, leading to the formation of ATP. This step also is a substrate level phosphorylation. This reaction is irreversible. अब आते हैं conversion of pyruvate to lactate. Significance. Under anaerobic condition, lack of CO2, pyruvate is reduced by NADH to lactate. In presence of the enzyme lactate dehydrogenase, competitive inhibitors oxalate. Oxalate जो है competitive inhibitor है. The NADH utilized in this step is obtained from the reaction catalyzed by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. The formation of lactate allows the regeneration of NAD+, which can be reused by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, so that glycolysis proceeds even in absence of oxygen to supply ATP. The occurrence of uninterrupted glycolysis is very essential in skeletal muscles during strenuous exercise, where oxygen supply is very limited. Glycolysis in the erythrocytes lead to lactate production. Since mitochondria, the centers for aerobic oxidation, are absent, brain, retina, skin, renal medulla, and gastrointestinal tract derive most of their energy from glycolysis. Okay, lactic acidosis. Lactic acid is a 3-carbon hydroxy acid. Elevation of lactic acid in the circulation, normal plasma 4 to 50 mg per deciliter, may occur due to its increased production or decreased utilization. Mild forms of lactic acidosis, not life-threatening, are associated with strenuous exercise, shock, respiratory disease, cancers, cancers, low pyruvate dehydrogenase activity, von Gerkes disease. Severe form of lactic acidosis are observed due to impairment or collapse of circulatory system, which is often encountered in myocardial infarctions, pulmonary embolism, uncontrolled hemorrhage, and severe shock. This type of lactic
Acidosis is due to inadequate supply of O2 to the tissue with a drastic reduction in ATP synthesis, since the cells have to survive in anaerobic condition, which may even lead to death. The term oxygen debt refers to the excess amount of O2 required to recover. In clinical practice, measurement of plasma lactic acid is useful to know about the oxygen debt and monitor the patient's recovery and save the patient from morbidity and mortality. Production of ATP in glycolysis. The detail of ATP generation in glycolysis from glucose are given in table 13.1. Under anaerobic condition, 2 ATP are synthesized, while under aerobic condition, 8 or 6 ATP are synthesized, depending on the shuttle pathway that operates. When the glycolysis occurs from glycogen, one more ATP is generated. This is because no ATP is consumed for the activation of glucose. Glycogen directly produces glucose 1-phosphate, which forms the glucose 6-phosphate. Thus, in anaerobic glycolysis, 3 ATP are produced from glycogen. Glycolysis and shuttle pathway. In the presence of mitochondria and oxygen, NADH produced in glycolysis can participate in the shuttle pathway. Refer chapter 11 for the synthesis of ATP. If the cytosolic NADH uses if the cytosolic NADH uses malate as parted shuttle, 3 ATP are generated from each molecule of NADH. This is in contrast to glycerol phosphate shuttle that produces only 2 ATP. Cancer and glycolysis. Cancer cells display increased uptake of glucose and glycolysis as the tumors grow rapidly and blood vessels are unable to supply adequate oxygen, and thus a condition of hypoxia exists. Due to this, anaerobic glycolysis predominantly occur to supply energy. The cancer cells gets adapted to hypoxic glycolysis through the involvement of a transcription factor, namely hypoxia-inducible transcription factor HIF. Hypoxia-inducible transcription factor HIF increases the synthesis of glycolytic enzyme and the glucose transporter. However, the cancer cells cannot grow and survive without proper vascularizations. One of the modalities of cancer treatment is to use drugs that can inhibit vascularization of tumors. Irreversible step in glycolysis. Most of the reactions of glycolysis are reversible. However, the three steps catalyzed by the enzyme hexokinase or glucokinase, phosphofructokinase, and pyruvate kinase are irreversible. These three stages namely regulates glycolysis. The reversal of glycolysis reversal of glycolysis with alternate arrangements made at the three irreversible stages leads to the synthesis of glucose from pyruvate gluconeogenesis. अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. Three enzymes, namely hexokinase and glucokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase, catalyzing the irreversible reactions, regulate glycolysis. Hexokinase is inhibited by glucose 6-phosphate. This enzyme prevents the accumulation of glucose 6-phosphate due to product inhibition. Glucokinase, which specifically phosphorylates glucose, is an inducible enzyme. The substrate glucose, probably through the involvement of insulin, induces glucokinase. Phosphofructokinase (PFK) is the most important regulatory enzyme in glycolysis. This enzyme catalyzes the rate-limiting committed step. PFK is an allosteric enzyme. Phosphofructokinase is an allosteric enzyme regulated by allosteric effectors. ATP, citrate, and H+ ions, low pH, are the most important allosteric inhibitor, whereas fructose 2,6-bisphosphate, ADP, AMP, and inorganic phosphate are the allosteric activator. Role of fructose 2,6-bisphosphate in glycolysis. Fructose 2,6-bisphosphate is considered to be the most important regulatory factor.
Okay. CMP, phosphofructokinase 2, ATP से ADP बनाया, फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट बना, फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना. रेगुलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट, activator or controller PFK phosphofructokinase and ultimately glycolysis in the liver. Fructose 2,6-bisphosphate is synthesized from fructose 6-phosphate by the enzyme phosphofructokinase called PFK2. Phosphofructokinase 1 is the glycolytic enzyme. Fructose 2,6-bisphosphate is hydrolyzed by fructose 2,6-bisphosphatase. The function of synthesis and degradation of fructose 2,6-bisphosphate is brought out by a single enzyme, same peptide, with two active sites, which is referred to as bifunctional enzyme. In fact, the combined name of phosphofructokinase 2 or fructose 2,6-bisphosphatase is used to refer to the enzyme that synthesizes and degrades fructose 2,6-bisphosphate. The activity of phosphofructokinase 2 and fructose 2,6-bisphosphatase is controlled by covalent modification, which in turn is regulated by cyclic AMP. Cyclic AMP is the second messenger for certain hormones. Cyclic AMP brings about dephosphorylations of the bifunctional enzyme, resulting in inactivation of active site responsible for the synthesis of F2 fructose 2,6-bisphosphate, but activation of the active site responsible for the hydrolysis of fructose 2,6-bisphosphate. Pyruvate kinase also regulates glycolysis. This enzyme is inhibited by ATP and activated by fructose 1,6-bisphosphate. Pyruvate kinase is active in dephosphorylated